Hello everyone, welcome back to a new video. I am Dr. Jay Savla, currently a first year internal medicine resident at Safdarjung Hospital, New Delhi. So finally I get some time to make a video. This is regarding this is for everyone who is just starting their internship. Congratulations to all of you. Recently a lot of colleges have announced their final year results, final year MBBS exam results, and also many students now will be appearing for the final year practicals. I think in my college and many colleges in Maharashtra, the practicals will still remain. As usual, they take a lot of time, but uh, after you finish your practicals, you can take a short break and then start preparing, because whoever wants to crack it in internship, you can't take a very long break, around 15 days max, and then you have to start as soon as your duties start. So this is I am taking help of the thread which I recently posted on Twitter and got a good response. So I just thought key for all my YouTube followers, I will just quickly make a video. That's because I have time today and बहुत आलस आ रही है, बट फटाफट बना लेता हूँ. So again, congratulations to all of you, but just keep in one thing in mind, that this is the first step of a very long journey. I know you have already given so many more exams, you have studied so much, but the movie still, the picture abhi baki hai. And like this year, the work you put in and the rank you get in your NEET will decide a lot of things, like the way it has for me. So yes, okay. So we start. Basically, first is be aware of your internship schedule. In our college, there was a trend that the first 1 to 20 or 30 used to get medicine first. Then I was in the second batch, 30 to 60. I had got casualty and ENT ophthalm first, and then medicine, OBGY, surgery. That was my order. So you should know when will you have heavy postings and when you will have lighter postings. So if you are starting out with lighter posting like BSM or other subjects, you should make a point that you will study more in these months. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है एंड यू वांट टू एन्जॉय एंड यू हैव अ वेरी लाइट पोस्टिंग, सो यू वेस्ट योर टाइम. मेडिसिन से स्टार्ट हो रहा है तो इट्स ओके इफ़ यू डोंट स्टडी दैट मच. वैसे टाइम मतलब मेडिसिन तो कभी होगा तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, स्पेशली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ओके, द सेकेंड रूल इज़ दैट consistency is much more important than the materials you use, the amount of knowledge you add in MBBS, etc. etc. Nothing matters if you are consistent throughout entire year. It will become very easy at the end, because like every student has a phase when they will not feel like studying. I remember during my internship, I had begun well in February and March. April be kind of was okay. Then medicine, in May I had medicine. Medicine ICU, and COVID was, it's at like May 2020, not 2021, May 2020. Medicine, the COVID was at its brutal peak. Like in Mumbai, it was a havoc, and KEM was bearing the brunt of it. And I was posted right there at the epicenter of it. And just an 8-hour shift every day used to tire me so much कि मैं पूरा महीना hardly कुछ पढ़ा. Like I hardly even opened my books. मैं सिर्फ रूम पे आता था, सोता था. I used to play PUBG or just chill, and then again go back to the work next day. पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता था. So that will be your thing. Then resources. So this is one point that you should be clear right from the start. Like जो भी करो, stick to it till the very end. Don't keep on continuously changing it. पहले ही decide कर लो कि what do you want to do. Like anatomy, I knew कि मेरा IIMS में अच्छा नहीं है, तो I have to use something different. So मैंने देख लिया क्या क्या options available है. उसमें I thought कि अश्विनी कुमार सर का best है. So that way I decided, and अश्विनी कुमार सर के anatomy notes पढ़ लिए, या थोड़ी एक आध दो वीडियो देख लिए. Then till the very end I was using the same notes. Same way for every subject, you should know what suits you and what is best for you, and just stick to it, because revisions matter much more than what resources you are using. Even if you are using a resource which has given less info, but if you revise it 100 times, then you will get, like, you will be able to solve questions 100 times. So ज़्यादा बोल दिया, but if you revise it 5-6 times, so you will be able to solve questions much more easily than even if you have a lot of knowledge. Okay, resources I think I can make a separate video also, and I can make a full like I will make a Twitter thread for all the resources for each subject, detail में what I used. Then coming to questions and GT, I have already told it before in my so many previous videos, but this is a bit compilation, so मैं सब main points बोल रहा हूँ. And you have to start solving questions from the word go.
every day try to be consistent in solving questions. Also, when grand tests, usually everyone starts after completing their first reading. It is up to you. For me, जैसे मे में when I was not reading anything, मैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था कभी अगर मन हुआ तो, और एक आध दो ग्रैंड टेस्ट ही होंगे पूरे महीने में, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो अगर कुछ मन नहीं हो रहा है, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, देन एटलीस्ट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन और गिव ग्रैंड टेस्ट. ओके, दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. देन डिस्कशन, ये आई थिंक आई हैड अ वेरी गुड, आई वॉज वेरी लकी टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड ऑब्वियसली आई वॉज एट KEM, सो ये भी बहुत बेनिफिट होता था. एवरी वन अराउंड मी हैड अ टारगेट कि दे वांटेड टू क्रैक नीट इन दियर फर्स्ट अटेम्प्ट. सो लाइब्रेरी जाओ, हॉस्टल में जाओ, कहाँ भी जाओ, तुझे कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. ऐसी बातें ये सब के अराउंड ही चलती थी. मस्ती तो होती ही थी, बट ये सब के अराउंड भी बातें चलती थी, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या चल रहा है. तो इफ़ यू आर among people who are committed, who want to do it in the first attempt, और फर्स्ट अटैम्प्ट तो छोड़ दो, मतलब कोई भी अटैम्प्ट होने दो, if you are repeating and if you are around people who are committed enough, who are dedicated enough, then you will also feel like working even when you don't want to. तो मैंने यही लिखा कि on days when you are totally out, they will help you. हाँ, मतलब वो they will help you out. Okay. And images and clinical aspects, for this I already told you कि whenever you are doing a posting, whenever you are doing anything, you should know कि what is the reason behind it, any procedure, any investigation which is being ordered, any monitor you are seeing in the ward, ICU, wherever, just कि ये जो हम लोग कैप्नोग्राफी पढ़ते हैं ना, वो सब वार्ड में रहता है. इफ़ यू लुक एट द वेंटिलेटर मॉनिटर्स, यू विल सी द कैप्नोग्राफी ग्राफ्स एंड ऐसे सब. Just keep your mind and eyes open always. Ears, mind and eyes open. तो बहुत कुछ you will just see. And basically also, हाँ, सीनियर्स को पूछना है whenever you feel कि अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो you are not able to come to a conclusion, you are not able to think why this was being ordered. तो like even in my PG now, every day I learn a thing which I haven't heard any time. मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ लिया, पर ऐसा कुछ नहीं है. It is never ending. As long as you are interested, you will always come to know of new things every day. ठीक है. एंड इसके लिए आई ऑल्सो टोल्ड बिफोर कि इमेजेस स्पेशली के लिए यू हैव टू मेक व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ ईच सब्जेक्ट विद योर फ्रेंड और अलोन, एंड देन कीप एडिंग इमेजेस, लेबल देम. जैसे मैं कभी भी एक्सरे ECG पर दिखता था तो फटाक से फ़ोटो खींच लेता था, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया. कोई फाइंडिंग देखी है वो ECG वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी. वो सब्जेक्ट वाइज मेरे पूरे 19 ग्रुप्स थे, 19 सब्जेक्ट से व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, एंड दैट वे इट वुड बिकम वेरी ईजी. सोशल मीडिया, दिस इज़ अगेन इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड. कोई ऐसा फिक्स टूल नहीं है कि यू शुड नॉट बी ऑन सोशल मीडिया और यू शुड बी ऑन सोशल मीडिया. सम पीपल गेट डीमोटिवेटेड बाय सीइंग अदर पीपल्स लाइफ, some people are motivated by seeing other people's life. It is depending on your personality. You have to decide. If you think कि you are not like you are feeling depressed, not able to study, you are getting too distracted by social media, don't use it. Simple. कुछ नहीं यूज़ किया तो कुछ नहीं होने वाला है. मेरे ऐसे लोग का वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं होने वाला है. If you are dedicated enough, पढ़ लोगे तुम. एक आध वीडियो यूट्यूब पे देख लिया तो कुछ क्या हो जाएगा. बाकी सोशल मीडिया पे ज़रूरी रहना नहीं है. Then breaks and hobbies. This is also a very important aspect which you should like. ये भी serious talk है कि आई रिमेंबर कि मैं इतना लकी था मेरे कैंपस में. मुझे जब भी कोई दिन ऐसा लगता था ना कि भाई बिल्कुल ना काम करने का मन है, ना पढ़ाई करने का मन है, ना कुछ करने का मन नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ खेलते रहता था. कोई दिन मुझे PUBG खेलने मिल जाता था लोगों से साथ, कोई दिन क्रिकेट, कोई दिन फुटबॉल, समथिंग. मतलब वो इतना रिफ्रेशिंग हो जाता था. इट कुड मेक यू रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. एंड मैं तो इतना पागल हूँ कि माई कॉलेज वॉज इन परेल इन मुंबई एंड माई हाउस इज़ नियर बोरीवली. सो I have a few friends near my house. I used to go to play cricket with them. तो मैं ट्यूसडे को इवनिंग को दे यूज टू प्ले 8 to 10. तो मैं सिर्फ घर पे 6:30 7 o'clock को निकल के टर्फ पे जाता था, रात को घर पे सो जाता था, सुबह नेक्स्ट दिन वापस हॉस्पिटल में. ऐसे भी मैंने किया था. मतलब इतना मुझे वो ब्रेक का ज़रूरत रहता था. सो दैट वे यू हैव टू डू इट. ओके. एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओके, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम. दे विल फील कि क्या कर रहे हैं यार, ये हर बार पढ़ते रहता है, रोते रहता है. अभी फाइनल ईयर निकल गया तो बोल रहा है, रो रहा है, पढ़ रहा है. ऐसा नहीं है. यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड दिस एग्जाम हैज़ 19 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर एट वंस, 5.5 years ऑफ करिकुलम ऑल टुगेदर इन वन एग्जाम. सो उतना प्रिपरेशन चाहिए. एंड येस, आई विल conclude with one of a very good quotes from Shawshank Redemption. Those who haven't seen the movie, please watch it. Hope it's a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. Like 4 months back, I could have never imagined that I'll be so happy, I'll be so satisfied with my life. But yeah, God has been kind.
finally all the work that we have put in someday is rewarded to us, and I think it is being rewarded. Yeah, thank you, all the best. Keep working, keep studying, keep enjoying. uh, just make a target कि you have to get into the subject you like. बस your at the start of your internship the only target should be कि आपको जो ब्रांच पसंद है you have to get into that no matter where. Okay, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कॉलेज इंडिया में अच्छा है या दो ही कॉलेज अच्छे हैं. All colleges are good, all government hospitals are very good, you get a lot of patient exposure. So if you like that branch, if you get into it, you will find the purpose of your life. Okay, all the best.